Ruckus Avenue Radio. This is Raj Pablo, right? Yeah, Who's Raj? I'm Raj, that's Pablo. I'm Pablo. Yes. Okay, continue. Okay, Pablo, should I start? I think, Pablo. yeah, you're going to start, Raj. Pablo, What's the matter? you'll never believe this, right? Right, I have just watched something amazing. You are going to love it. It's got everything. It's got politics. It's got revenge. It's so apt. And it's brilliant star cast. Maharani, you have to watch it. And of course, on our show, we are lucky enough to have Soham and Amit, who are in the series Maharani, with us. Guys, welcome to the Raj and Pablo show here on Ruckus Avenue. Firstly, how excited are you? Let's start off with you, Amit. How excited are you about this? You know, I've been asked this question many times before you just did. Uh-huh. And I think my mantra is not to get too excited and you know, just wait and watch. And neither am I, not excited about it. But, you know, I'm just trying to balance myself in the middle because we know what we've done. We've worked very hard at it. And I would just wait for the verdict of the audiences to, you know, get into the excitement mode. I'm sorry, I'm very excited about it because when I watched You are. it was I can so see that. powerful. It just like, I was like, what is, because it's set in the 80s, it's meant to be a true story, but it was so real. I was engrossed and it's been a long while. I'm raving about it. How did you get involved, Tom? I'm really excited about it because I'm from a small town in India, and I have done a lot of films, and it's very intellectual films like Ship of Theseus, Tumbad. तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ गंगानगर में. Can you understand Hindi or should I? मैं हिंदी भी बोल सकते हो आप. हाँ, तो मैं छोटी सी जगह से हूँ गंगानगर से. जी हाँ. और मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो है ना, उनको मासी चीजें पसंद आती हैं, जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर पसंद आते हैं. तो तुम जैसे हमारी प्रीमियर हो रही थी वेनिस में, और मैं बड़े चाव से मेरी माँ को लेकर गया वहां पर, और मेरी मम्मी सो गई फिल्म देखते देखते, और बाहर निकल के मतलब तालियां बजा रहे हैं लोग, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, और मेरी माँ बाहर निकल के कहती है कि यार कैसी फिल्में बनाता है, कितनी डरावनी फिल्म थी, मुझे भी नहीं आता है. मतलब उनको थोड़े से मैस्कुलिन कैरेक्टर चाहिए जो थोड़े से लार्जर देन लाइफ हो. तो मैं मतलब ऑडियंस के लिए तो हूँ कि ऑडियंस देखेगी, उनको मजा आएगा. सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इस चीज के लिए हूँ, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उनको मजा आए, वो लगे कि उनको लगे कि हाँ इन्होंने कुछ किया है. और जैसा कि आपने कहा, शो ये 70s 80s में है, और मतलब मेरे लिए सबसे खास बात इस शो की है कि ये शो थोड़ा सा वैसा है कि मासी है, बड़े बड़े डायलॉग्स, राइवलरी कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और एट द सेम टाइम वी हैव मेड इट इन अ वेरी कंटेम्प्रेरी वे. जो राइटिंग है शो की, जो क्राफ्टमैनशिप है, वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है. तो वो जो मिक्सचर है, जो वो जमाने का, वो जो जिस जमाने में हम बड़े हुए हैं, कि वो स्वैग, बच्चन साहब की फिल्में, बच्चन साहब, बहुत खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, वो टाइप की टक्कर है, और जबकि बनाया बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीके से है. तो मैं उस कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. वो बहुत अच्छा, और जब आप कोई कुछ जो when politics are involved, जब politics होती है सब्जेक्ट, तो थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि सबकी नजर आपके ऊपर होएगी कि आप क्या कर रहे हैं, इस एंगल से ले रहे हैं व्यू? नहीं यार, मैं बिल्कुल भी घबराता नहीं उस चीज से. मेरा एक ही सोचना है कि मैं जो भी काम लेता हूँ, मैं अपने डायरेक्टर पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ. या तो मैं कोई चीज साइन नहीं करता हूँ, और मैं साइन करता हूँ, मेरा मतलब हमेशा मानना है कि मेरा डायरेक्टर मुझसे 4 कदम आगे हो, मुझसे ज्यादा समझदार, ज्यादा होशियार हो. तो जो सुभाष कपूर सर हैं हमारे, जो क्रिएटर हैं शो के, और किरण जो डायरेक्टर हैं, तो वो मुझे लगता है कि हम बहुत ही सेफ हैंड्स में हैं. तो मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे. मैं तो एंजॉय करता हूँ वो प्रोसेस को, कि मेरे लिए एक्टिंग करना एक वेकेशन होता है, कि आप गए, आपने शॉट दिया, कट, क्योंकि मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, प्रोड्यूस करने में जान निकल जाती है, तो मुझे लिए वेकेशन होता है, मुझे बहुत मजा आता है. जैसे आपने जो हमने देखा ना, एक तो है ये सीरियस भी है, मगर आपको दोनों को डर नहीं लगा कि because it's very relevant to today's politics as well, कि सरकार क्या कहेगी आप लोगों को, कि आप उनका मखौल कर रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं. I really don't think so, that because the thing is, it's a political drama, but it's a very personal drama as well. It's a
very personal story of the characters involved in it. So yeah, I mean, you know, it's like you, like as an actor, I would get offered a role to play a cop, for example. So my approach always to take up that character is, yes, I mean, he'll have his mannerisms, or you know, he'll have his life, his environment, you know, in the police circle, with the police, behaving like the police. But what is the person behind that? You know, so you can always play. I always try and play the person who happens to be a cop rather than the other way around. Right. You But know, surely, so- can I ask you, like, you know, when you were filming, this is a question to both of you. Were Yeah. there any points when you're filming a scene that you kind of went, I bet this happens in real life? Yeah, I mean, many times. I mean, you know, I'll tell you why. Because whatever anybody creates on a piece of paper, it's there are two aspects to it. Either it's completely imaginary, but then what is imagination? Imagination comes from the nooks and corners of your subconscious mind, right? So I mean, you cannot. It is. I think it's impossible to imagine something which has no reference to it. So obviously there will be some kind of reference to it, and obviously any piece of writing which goes into depth will be inspired from something. So You know, let me like- rephrase that. So was there anything that you read in the script that was inspired by possibly true events that you were shocked about, thinking, does this really happen in our political system? I mean, I will not go into the detail of it because you'll have to watch the show for that. But to answer your question, yeah, there were many things. It's, you know, and those things primarily are that as audiences, as viewers, as you know, listeners to the politicos, the political leaders, you're always watching them in a public space. So they're always behaving in such a manner where they're trying to impress or you know, provide information to the public. So they're being very careful and very calculative about it. But then when you do a show about political people and you're playing one of them, then the writers also go what is happening in their real life and what are the permutations, combinations they're trying to make, you know, to make themselves viable to the public they're approaching. So yeah, those kinds of things are shockers, and the good thing about that is that it's the kind of mathematical, arithmetic calculations that these guys go to, and the ease with which they go that with. It's interesting, it's exciting, and it's an eye opener. You know, like they would probably, you know, like Soham and my character are rivals. But that rivalry is not that of of goons, of, you know, street related. It's very mature, and it might have a huge impact on the life of people. But these two characters know that this is what you need to go through to get what you want. You know, so and it's the ease with which they take big decisions is very interesting to watch. Do you know what's magical about what you both have done? दोनों की performance इतनी real भी है, understated भी है, and you just want to know what you guys are thinking, doing. It's so real. I was engrossed. I just can't wait. But I want to ask you, what was it like working with Huma Qureshi? She's brilliant. Yeah. So what was it like working with Huma? Yeah, I'll tell you, but I would like to answer your first question. कि जो आपने पूछा ना था कि कुछ ऐसा लगा कि जो आपको लगता है कि रियल लाइफ में बहुत ही रिलेटेबल है. हाँ. तो जो पॉलिटिक्स है, जो कैरेक्टर्स हैं, हम लार्जली जानते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं, इंडिया में बहुत ही फेमिलियर होते हैं पॉलिटिक्स से. तो खास बात है ना वो शो की है कि फिक्शन जो पार्ट है इसका, जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, मेरे लिए वो बहुत मजेदार था कि वो रियल लाइफ में नहीं हुआ हो. रियल लाइफ के इंसिडेंट तो मोरलेस हमें थोड़े से पता होते हैं ब्रॉड स्कीम में, और जो हमारे राइटर्स ने इसको घुमाया है, जिसमें जो फिक्शन पार्ट लाए हैं, वो कमाल है. वो देखकर मुझे बहुत मजा आया. और सेकंड आप पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा सीन, तो जैसे हम विधानसभा शूट कर रहे थे, तो हमने देखा है विधानसभा में क्या चलता है, कैसे होता है, तो वो सीन देख मुझे लगा कि हाँ यार, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है.
और कई बार कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके बताना चाहता हूँ कि कुछ सीन आप करते हो और एक्टर को इतना मज़ा आता है कि वो जो हमारा लास्ट का सीन है जो आप ट्रेलर में देखेंगे जब हम असेंबली में और स्पीचेस दे रहे हैं वो देखकर मुझे लगा कि यार मुझे तो नेता बन जाना चाहिए। That was going to be my next question. Inspiration मिली आपको? हाँ, मुझे इतना मजा आया वो स्पीच देकर और उससे पहले हमें डर लग रहा था क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस थी हम और बहुत टाइम के बाद शूट कर रहे थे, बीच में करीब 1-1.5 महीना का गैप था तो उसके बाद हम शूट कर रहे थे तो मुझे वो स्पीच देकर मुझे लगा कि यार बॉस पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं अपन, नो प्रॉब्लम। वर्किंग विद हुमा बहुत मजेदार था यार। हुमा को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, मतलब 10 साल पहले हम साथ में जिम जाते थे तो दो भाई थे, उनको ट्रेन करता था, उनको ट्रेन करता था, तो बीच में कनेक्शन नहीं रहा था। और जैसे अमित की भी इमेज ऐसी है, हुमा की इमेज भी ऐसी है, मेरी इमेज भी ऐसी है, हमें दूर से कोई देखे तो सोचते कि बहुत ही सीरियस लोग होंगे, बहुत ही मेथड, बहुत ही क्राफ्ट और मतलब थोड़े से डैनियल डे लुइस टाइप के होंगे कि जबकि हमारा फोकस ऐसा है नहीं। तो हुमा तो सेट पर जब होती थी तो सबसे ज्यादा मजाक मस्ती वही करती थी, मतलब सेट पर एनर्जी चेंज हो जाती थी अगर हुमा होती थी। एट द सेम टाइम जैसे वो सीन शुरू करती वो फट से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेती है, पता नहीं कैसे करती है। तो आपको एज ए को स्टार सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि वो जैसे होता है ना कि एक्टिंग में मुझे लगता है कि ये मेरी सोच है कि वो बहुत ऐसे कस के नहीं पकड़ती है कि आई विल नेल इट एंड आई विल किल इट एंड आई मतलब फाड़ दूंगी, वो वाला उसका एटीट्यूड, वो फ्लो के साथ जाती है। तो वो एक एक्टर के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि उसमें आपको एक बहाव दिखता है, फ्लूइडिटी दिखती है कहीं ना कहीं। And Amit, what about you? Do you want to add to that? I think for me, working with Huma, you know, I've known her for years and years. Not like we've not been friends or anything, but I can give you an interesting trivia that when Huma, I think she was in her first year of college in Delhi, and a friend of mine and I were invited to be the judges for the dramatics competition in that festival. I want to hear this story. And Huma was participating in it. Obviously, her team won, and I kept in touch with her then for a brief period of time. But then obviously we lost touch, went our separate ways, and then I bumped into her in Mumbai. But so that's how I know Huma, and we were still very warm about it when we first met, and remembered the old days. But what the most shocking thing for me was during the shoot of the film that because I was shooting for another project simultaneously, and the first day I reached there, and when I saw Huma in that avatar of Maharani, I was taken aback because I could have never guessed in my wildest of imaginations how she would look. And it was not only about her looking the part; she was behaving like it. She had gotten into it, and as Soham said, as soon as the director said cut, she was her own self. And I think that's a great thing to have, to be able to disassociate yourself from the character and then suddenly look at it and then be able to look at it objectively from outside. And when you're supposed to perform, you get into it straight away. I think that's a very neat philosophy and a neat thing to have, a neat quality to have as an actor. Well, you know what? I know Raj has spoken about it, and I've managed to catch some of it because we've been lucky enough to get glimpses of what you guys are going to be showing everybody else. But gentlemen, it's been a pleasure talking to you. One more question I've got to ask. All right, a silly question. If Huma is the Maharani, आप दोनों से महाराजा कौन है? Soham. It is actually the chief minister, of course. But it has been a pleasure. Thank you very, very much, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ruckus Avenue Radio.